अच्छा, ये डोनेशन है जी, यहाँ चंदा होता है। इबादत का दिन है, वो मेरा ख्याल है संडे इतवार को होता है ना। इनके जो फादर हैं, पादरी से मुलाकात हो सकती है। कुरान कहता है कि आप मुसलमानों के करीब सबसे ज़्यादा उन लोगों को पाओगे जो अपने आप को हज़रत ईसा का मददगार कहते हैं, नसारा कहते हैं। तकब्बुर कम है इनमें, हक बात को सुनते हैं। And it's this man who is a religious scholar? Yes. Yes. इन मुस्लिम Yes, of course. The one who was the great cricketer and Prime Minister, Imran Khan. Oh. See the smile on her face. I think all Australians. Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. मैं इस वक्त मेलबर्न में एक चर्च के बाहर हूँ। आप ज़रा इसकी हिस्ट्री पढ़ें, बहुत पुराना चर्च है ये, 1963। बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा सा इनका कल्चर देखने का मुझे शौक़ है, तो ज़रा हम चर्च की भी ज़ियारत कर लें। अच्छा, चलते हैं जी आगे। बहुत पुराना है यार, 1963 का नहीं लग रहा मुझे ये, तो क्यों पूछते हैं उससे। ये देखें आप, ये कदीम तर्ज की इमारत है, मुझे नहीं लग रहा 1963 में बनी है। बहुत मजबूत तामीर है, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करते थे। चलो भैया, एंट्री। इन लोग को चाहिए कि चर्च में जो इनकी लेडीज़ आ रही हैं उनको तो प्रॉपर ड्रेस पहनने का ये हुक्म देना। क्या ख्याल है भाई? चर्च में जो गोरी औरतें आ रही हैं, इन लोगों को चाहिए ना कि क्रिश्चियनिटी में पर्दा है, असल जो ईसाईयत है उसमें तो पर्दा है, तो इनको चाहिए कम से कम चर्च के अंदर तो अपने मज़हब की हिफाजत करें ये। तो मैं चाहता हूँ ये व्लॉग के ज़रिए मेरा ईसाइयों को पैगाम पहुँचे कि आप कम से कम चर्च में के अंदर ख़वातीन को प्रॉपर ड्रेस का पाबंद करें, ताकि आपके मज़हब की रिवायात तो महफूज रहे ना। तो आपके मज़हब की एक रिवायात तो महफूज रहे ना कम से कम। तो क्रिश्चियनिटी में और यहूदियत में तो बहुत सख्त पर्दा है। चलें हम चलते हैं। खैर, ये है जी, अच्छा, ये डोनेशन है जी, यहाँ चंदा होता है। मस्जिदों में जब चंदा होता है ना, तो हमारे नए नए आजकल जो स्कॉलर आ रहे हैं, जिनको मौलानाओं से कुछ नफ़रत है, वो इन अदाओं पे बहुत क्लिप बनाते हैं कि ये देखो मस्जिदों में चंदा हो रहा है, चंदा लेते हैं। तो चंदा हर जगह होता है, ईसाइयों के चर्च में भी होता है, हिंदुओं में भी होता है और यहूदियों में भी होता है। तो एतराज़ जो इस पर करते हैं ना लोग, मौलवी लोग चंदे लेते हैं, एतराज़ इस पे करो कि चंदा सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कहीं कोई गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आप उस पर क्लिप बनाएं, आप उस पर एक्शन लें, हम भी आपका साथ देंगे। तो ऐसे लोगों को चाहिए चर्च के ख़िलाफ़ भी बनाएं क्लिप। तो ज़ाहिर है जो इबादत गाहें हैं उनमें अगर कोई शख्स चाहता है कि वो रूहानी सुकून के लिए वो चाहता है, वो समझता है, उसका ये नज़रिया है, कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर इबादत को प्रोमोट करूँगा तो इसका अजर मिलेगा, तो उसमें कौन रुकावट डाल सकता है? तो क्योंकि बाज़ स्कॉलर हमारे ऐसे हैं जो बार बार ना ये चंदा लेते हैं, चंदा लेते हैं, चंदा लेते हैं, बस इसी। अच्छा भाई, छत का देखे कितना प्यारा डिजाइन। छत बहुत ऊंची है, डिज़ाइन बहुत प्यारा है। इनका जो इबादत का दिन है वो मेरा ख्याल है संडे इतवार को होता है ना। तो यहाँ इनके जो फादर हैं, पादरी से मुलाकात हो सकती है शाहिद भाई? अगर मिल जाएंगे तो हो जाएंगे। थोड़ा सा हम उनसे मालूमात शेयर करेंगे। आप पूछ के आए। अभी जाने की जरूरत तो है, देखते हैं कोई टहल रहा हो जो। So you're hoping still to get
इस्लाम से जो मज़हब सबसे करीब तरीन मज़हब है वो ईसाईयत है, और इस्लाम दुश्मनी में जो सबसे कम लोग हैं, यानी जिनकी दुश्मनी दूसरों की निस्बत सबसे कम रही है इस्लाम से, यानी कुरान के मुताबिक जिनके दिल में इस्लाम की दुश्मनी सबसे कम है, यूँ अब मैंने सही एक्सप्लेन किया, वो भी ईसाई हैं। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। कुरान कहता है कि आप मुसलमानों के करीब सबसे ज़्यादा उन लोगों को पाओगे जो अपने आप को हज़रत ईसा का मददगार कहते हैं, नसारा कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कन्वर्ट होते हैं ना इस्लाम की तरफ, वो ईसाई होते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब भी ईसाई है। और कुरान ने एक और तारीफ़ की है कि इस्लाम के सबसे ज़्यादा करीब भी, और दूसरा इनके दिलों में नरमी भी दूसरे मज़ाहिब की निस्बत सबसे ज़्यादा है। ज़ालिक बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबान व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। तकब्बुर कम है इनमें, हक़ बात को सुनते हैं। दूसरे मज़ाहिब वाले एकदम अक्सर जज्बाती हो जाते हैं। आप किसी गोरे से बात करें, ईसाई से बात करें, तहम्मुल से आपकी बात सुनेगा। ये हमने यहाँ भी देखा भी है। बाकी मज़ाहिब वाले बहुत जल्दी जज्बाती होते हैं। तो ये कुरान ने 1400 साल पहले कहा था। दुनिया की मोहब्बत इनमें निस्बतन कम है, यानी रहबानियत है। और ला यस्तकबिरून, तकब्बुर कहते हैं हक़ को ठुकराना, ज़िद और हट धर्मी में। ये भी ईसाइयों में दुनिया की दीगर कौमों की निस्बत ये बीमारी भी कम है। मैंने ना कवर फोटो पे ये लगाया, मुस्लिम बिलीव इन जीसस। इतने क्रिश्चियंस ने मुझे मैसेज किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, उनको पता ही नहीं। तो मुस्लिम तो हज़रत ईसा पे और जीसस पे इनसे ज़्यादा ईमान रखते हैं भाई। हमारे तो ईमान का हिस्सा है सैयदना ईसा इब्न मरियम के बेटे। यार इस चर्च की तारीख तो बताओ, कितना पुराना। बताओ फिर वो भी आ रहा है। बुलाओ तो किसी बंदे को। फ़ोन कर दिया उसने। क्यों? मेरा गला ख़राब है। अगर मेरा गला ख़राब नहीं होता, यहाँ खड़े होके अभी मैं गाना गाता, सारे क्रिश्चियन मेरे इर्द गिर्द होते। कौन सा गाना? वो अभी निकल नहीं रहा ना आवाज़। कौन सा? वो जो ईसाइयों वाला, वो जो गीत जो पढ़ते हैं। गीत जो निकल नहीं रहा कसम। यार अफसोस हो रहा है अभी ज़िंदगी पे। ओपरा सिंगिंग यकीन करो इतनी प्यारी करता। हो सकता है कि दीवार से भी कोई आके बोलता है भाई चुप हो जा, रोड आ रहा है। अच्छा, तो आपकी आवाज़ एको भी करेगी। इन बेचारों का गला ख़राब है यार, पता नहीं क्या है। ये देखो, इंतहाई शरीफ मौलाना किसी ने देखने हो तो इनको देख लो आप। व्हाट्स आंसर? इंग्लिश में बड़ी फिट बात करते हैं ये। इजराइल एंड पैलेस्टाइन। वो दोबारा बताएं। ये खुद क्रिश्चियंस बोल रहे हैं, जो वॉर हो रही है ना इजराइल में। Christians should respond to the war in Israel and Palestine with deep empathy for all who suffer. Every single Israeli Jew and every single Palestine, Good. Christian and Muslim, is grieving, frightened and angry. वेरी गुड यार। आप ज़रा उनको भी तर्जुमा करके बताएं ना, जो लोग इंग्लिश नहीं समझते। बस वो भी, ये क्रिश्चियंस भी ये कह रहे हैं कि जंग से कोई फ़ायदा नहीं, किसी की मासूम की किलिंग कोई फ़ायदा नहीं। ओह थैंक यू। How are you? Was it this man? Yeah, he's Hi. I told you he's a scholar, Islamic scholar. Well, that's They got a 4.27 million subscriber in the आपका गला ख़राब है ना, शायद भाई को बोलने दें, ऐसा ना वो भाग ही जाए। शायद भाई प्लीज़। Mr. Mufti Tariq Masood is visiting from Pakistan, yes. and he's a YouTuber. He has a 4.8 million followers on the YouTube.
So he's interested in the history of यूट्यूबर नहीं बोले, मजहबी स्कॉलर religious बोले. scholar. He's a religious scholar, Religious very scholar. well known, very famous all over the world. Oh, I see. So he's just visiting Melbourne. So we brought him here YouTuber. to see the church Yes. and see the Christian brothers and sisters. Yes, here. and to see the exhibition of Yes. Palestine. And Yeah, we wanted to get some information regarding this church. right, I We see. wanted to know history of this. the history, the background of this church, when it was constructed, Yes. when it came into being. How old is this church? It How old? was created, opened in 1891. 1891. 1891. That's 9 years before the 1900s began. Okay. Because then we had to have all the 1900s and then 2000 and 2024. And it's this man who is a religious scholar. Yes. Yes. In Muslim. And yes, of Islamic. course. Yes. Yes, I read. I use a set of CDs which are concerned with mysticism in Judaism, Islam, and Christianity. Good, good. And so I'm not unaware of Good, the some Thank you. of the Muslim faith. Thank you. But though What I don't do you know, a great deal. sister? What do you know about Islam? Some people says that Islam teaches terrorism. Are you agree? They say it's Islam is a religion of terrorism. of terrorism. Oh, No? no, I Thank don't you. agree. Thank you. No, I know there are terrorists, and Christian terrorists, Jewish terrorists, Islamic, maybe some too. Yemen is Iraq, Iran. There can be groups of terrorists in any country, or a single person. I would never say that and never agree with that. So, what are the activities here when the church opens for the people to come and practice? It's open all the time, or do we have a specific It's open time? from 10 to 6 Okay. every day. All right. And on Sunday, of course, is For the day pray. of having the services. Yeah. The prayer time of. But I've just celebrated a service today at 12:15. We just Every got late. day we have a service at 12:15, and different people, women and men, different chaplains. See, I'm called a chaplain. That word there. I'm a voluntary Catholic chaplain, okay. and I'm an ordained Anglican priest, and so ordained Anglican priest, men or women, are asked to celebrate the service in the weekdays. Okay, anytime in the weekdays. Yeah, every day we have one. And on Sundays, it's a. There are 4 different services then. Yes. What is the concept of nun? Because when we were growing up, we watched movies which had nuns in those movies. Oh, so yes. what What is the happening to concept that? of What is nuns? the concept of nuns? Of those who dedicate their lives in poverty, chastity and obedience. You mean like nuns and monks? Yes, See, yes. there are men and women. Yes. Well, actually, where's my oblate's cross? I am what's called an oblate of a community of Anglican women who are dedicated and live their lives under the vows, 3 vows. So, Yes. you are a nun yourself as well? No, I'm not. I'm closely associated with them. I live my ordinary life out in the world, but I try to live simply. See, poverty I see as simplicity, and chastity and as complete dedication, singleness, and obedience I see as service. Service. So oblates live their lives out ordinarily in their places that they live in and their workplaces, but they try to live as closely as possible to the sisters or the brothers. But what about the nuns? They have their इनका आप own ट्रांसलेशन भी करते हैं ना साथ साथ. अच्छा ये कह रहे हैं कि ये जो है नन नहीं Well, a है. nun is technically a person who is enclosed and lives their whole life within a place. Okay. They're like Benedictines or one of the others who follow a particular form of religious life, and they are people dedicated entirely to prayer and study and.
नन्स जो हैं वो अपनी लाइफ जो है पूरा अपने रिलीजन के लिए दे देती हैं। उनका कोई घर नहीं होता, चर्च ही उनका सारी चीज़ें हैं। सुबह से दोपहर खाना पीना सर्विसेज खिदमत सिर्फ चर्च की करनी। ये जो है ये नन नहीं है। सही। ये नन के वेरी क्लोज हैं, ये अपनी लाइफ गुजारती हैं अपने हिसाब से, लेकिन अपनी लाइफ इन्होंने जैसे हमारे पास होता है, हम मुसलमान हैं, इबादत करते हैं, लगे रहते हैं मुसलमानों के साथ, मस्जिदों के साथ, तो ये भी वही करती हैं। सही है, सही है, ठीक, गुड। तो Because there are Buddhist ones too, aren't there? Buddhist nuns and Buddhist monks are there, and I know. I mean, they live the life like the Christian men and women who live under vows. Yes. And they इनसे do. पूछें कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, क्योंकि अब तो एथियज्म बहुत फैल रहे हैं, तो प्रैक्टिकली ईसाइयत को फॉलो करने वाले लोग हैं जो बहुत हैं। people practicing Christianity these days. There are, but not nearly as many as used to, Yes. and not many as there should be. What but is the reason you there think? are. What is the reason you think that the people have? It's because the world has become far too secular, too interested in consumer and having happiness and making money. इनसे कहें कि कितना रेशो है यहाँ मेलबर्न में जो लोग हैं वो प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में ईसाइयत कितनी है, एक है या नहीं है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। He's asking, do you see Christians practicing Christianity nowadays, and do you have any idea what is the ratio? Has it come down? No, I would increased? never like to numerate. I would never like to give a statistic or to give an amount at all or numbers. That's not my role, and all I know is that I worship with some people who are very dedicated and who do try and live the way of Jesus. See, it's whether we live out the way of Jesus. Now, there are many people who don't worship in a Christian church, but they do follow a good life, and they follow and they imitate something of Jesus' life, Okay. but they don't all go to church. तो ये and कहती हैं worship. कि रेशियो या मैं स्पेसिफिक नंबर्स नहीं बता सकती, लेकिन ये कहती हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस पहले होती थी अब लोगों ने बहुत कम कर दिया। मैंने उनसे पूछा इसकी वजह, तो वो यही कह रही हैं कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, सब इंडिविजुअल हो गए हैं, अपनी अपनी सोचते हैं, मतलब अपने उसमें है, तो फास्ट इतनी लाइफ है, आगे क्रिश्चियनिटी की तरफ आते। कुछ लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करना चाहते हैं लेकिन चर्चेज नहीं आते, अपने घर में रह के जो ना प्रैक्टिस करते हैं, वो नज़र नहीं आते ऐसे। थैंक्स। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंट्री पाकिस्तान? डू यू नो? I know in the past of Benazir Bhutto, and particularly Benazir Bhutto, okay. I remember, and I think she was a very fine person in many ways, Okay. and I was sad to that she was assassinated. Yes. I've known also, of course, about the one who was the great cricketer and Prime Minister, Imran Khan. Oh. See the smile on her face. I think all Australians know, well, many Australians, if they're cricket lovers, they would know about Okay, Imran. okay. Imran Thank you. And but also we know that there have been some leaders who didn't seem to be altogether good leaders. They seem to somehow, I think some of them have been very much caught up in the secularization. They've not been faithful Muslims. They've been more concerned with making themselves great. जल्दी बताएं। पहले तो इन्होंने बेनज़ीर की बात की, हाँ वो तो सब इमरान खान। दूसरी जो बात कर रहे हैं कि बहुत आपने सारे ट्रांसलेशन पब्लिक के लिए करनी है, इसलिए आसान कर। बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी रहे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अपने इस्लाम को पीछे छोड़कर अपने लिए सियासत की, पाकिस्तान में ना हुक्मरानी की। बेहतरीन तो बात। दो लोगों की बात की, बेनज़ीर की और इमरान खान की, लेकिन दूसरों की जो बात की वो यही कह रही है कि उन्होंने अपने इस्लाम को छोड़ के अपने लिए सियासत की। पाकिस्तानी इस्लाम का भी पता है। वेरी गुड। Sister, very nice to meet you.
and And you, yes. we invite you to visit our country, this Pakistan. Gentleman is. You are an Imran or an Iman? Imam, no. No, Imam not. He is an engineer. He's an imam as well. In- Like in Pakistan, he's an imam. He's a. He's an imam as well. the Islamic Muslim. scholar. Oh, An right. imam as well. He's also an Iman Yeah, too. yeah, Yes. Right. Yes, and has a particular gown. Not every Pakistani. Yes, I mean, you're a Pakistani. yes, true You're that. not wearing that. True that. सही है सही. Been nice to meet with you, and please be assured that we Christians, we do not think of Muslim people as terrorists. Thank you. You know what we are believe? We believe the 100%. We believe Jesus. This is the prophet of the God. Yes, I know that. And what our thing we say is the new version of Jesus is Muhammad, because we believe that Muhammad is the last prophet. They Muslim people, the Quran honors Mary too, the mother of Jesus. See? Yes. Thank you very much. Thank you. To make it clear. Thank you. Good wishes for you. Thank you. And I hope that everything goes well and that you are able to continue to practice your faith. Thank you. Thank you very much. चलो भाई, ये सलीम भाई की जो ईमानी और पठानी गैरत दोनों जाग गई थी, इन्होंने उसको मुसलमान करना शुरू कर दिया. नहीं मुफ्ती साहब, और आप बताया कि वगैरह मेरा वगैरह पॉइंट ऑफ वगैरह. व्यू सुने आप. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम टैक्सी, इन लोग क्या है, इनको पता नहीं कि हमारा, तो इनको कंपेयर कर रहा था कि हमारा 100% बिलीव जीसस के. वो वैसे आप टैक्सी में जब कोई कस्टमर आए ना, उसको समझाएं. चलिए. यहाँ चर्च में आप आए हो, जो आपने जो इनसे सीखने की चीज़ है वो आप सीखो, ठीक है ना. सीखने का मतलब ये कि क्रिश्चियनिटी के बारे में नॉलेज हमारा मकसद है, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं क्रिश्चियनिटी में, मज़हब में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपको पता है ये जो आसमानी मज़ाहिब जो है ना, इनकी जब से मुखालफत हुई है तो कितनी दुनिया में बेहयाई फैल गई है. तो और कैसे होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है दुनिया में, तो ये मज़हब ही ख़त्म होने का ही तो नतीजा है ना. तो किसी भी फॉर्म में मज़हब का होना ना होने से बहरहाल बेहतर है. चलो भाई, आवाज़ मेरी अब सही हो रही है. ये लोग किसी न किसी तस्वुर में अल्लाह को तो मानते हैं ना, पैगंबरों को तो मानते हैं, किसी न किसी, उनसे तो अच्छे हैं ना जो बिल्कुल ही मुनकिर हैं. वो खातून जो है मेरी कैब की वजह से ना मुझे इंजीनियर समझ रही है, और जो हमारे शाहिद भाई इंजीनियर हैं इनको मुफ्ती साहब समझ रही है. मैंने धूप असल में बहुत है यहाँ मेलबर्न, उस धूप की वजह से हमने कैप पहनी हुई है. आधा सच करे, आपको मौलाना बना दे, मुझे मौलाना ही रहने दे. वो इनको मुफ्ती समझ रही है, शाहिद भाई को. असल में ये धूप बहुत हो रही है, इसकी वजह से मैंने कैप पहनी हुई थी. तो चलो भाई, किधर जाना है अभी? Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.